Welcome again. So in this live session we are going to learn about the age of how to calculate or how to measure the age of universe, and then number 2, how are the origin of solar system, right? So these two things are the 2 parts about today's session that we are going to deal with. So I'm hoping that my voice is audible and the screen is visible. So if such is the case, then those who are live, they can let me know that everything is alright in the form of writing in the comment box, because you have source and I'm here for you to facilitate you, right? So be active. When you do, so you own it. That's all. So let's start. Regarding estimating the age of universe, so we have 2 scenarios. हम 2 scenarios बनाते हैं. ठीक है. First, either we go for tracing the rate of expansion. एक तो हम एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. और दूसरा हम tracing the what age of oldest objects, I mean stars. Tracing the age of oldest stars, right? So as regards to this tracing the rate of expansion, so we can done with via Hubble's law. Hubble's law or Hubble's constant, right? Now as regards to this tracing the age of older stars, so we come to believe that life on stars depends on its mass. Stars की जो लाइफ है, it is directly proportional to its mass. ठीक है, जितना इसका मतलब मास है उसी हिसाब से इसकी लाइफ होगी. बिकॉज massive stars have higher brightness and consume its hydrogen completely and relatively fast, and ultimately it die. ठीक हो गया. जितना इसके ज़्यादा मास है एक स्टार की,
तो उसी हिसाब से ये स्केल ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी और उसी हिसाब से जो है ना ये अपने हाइड्रोजन जो है ना थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन कंज्यूम करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली और रिलेटिवली फास्ट और इस हिसाब से ज़्यादा जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, आप जल्द ख़त्म हो जाएंगे. नाउ Hubbles law or Hubbles constant. As we know that V denotes the velocity of moving body as we are talking about the stars in galaxies. So we will be taking those in account, directly proportional to density of stars or galaxies, right? Now, so we can write this relationship as such that V is equal to H times D. This H is called constant or Hubble constant, and this H is equivalent to around 65 kilometer per second per million per sec. बस यहाँ तक हमारा काम है, आगे जो है ना इसमें कुछ आगे पीछे नहीं है. Let me take you to account that क्या कह सकते हैं हम इस बारे में. We also know that the amount of redshift in absorption, जो redshift है ना ये हम I'm going to tell you about this later on. Redshift जो absorb करती है, it is directly proportional to distance of the galaxy, and that is related to what, जितना जो है ना red shift in absorption directly proportional to distance of the galaxy. अगर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो हम उसकी थ्रू रेड शेप जो कि वेव है, वेव के फॉर्म में है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू ब्लू शिफ्ट. तो जितना उसकी एब्जॉर्प्शन है हमारे डिवाइस में, तो इससे ही ये हम आखिर कर सकते हैं कि उस गैलेक्सी की डिस्टेंस हमसे इतना ही दूर है. दैट्स ऑल अबाउट दिस concept, and this concept is further related to what? In view of this relationship, we can write that V over D, velocity of the galaxy, divided by the distance of that galaxy, is equal to 1 over H, right? So this relationship tells us or gives us time for expansion to the present, while this relationship reflects what? The age of यूनिवर्स. ठीक है, हमें ये पता है और इसकी वैल्यू भी मालूम है जो कि ये है. तो काम क्या रह गया? दैट्स सिंपल. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एज रिगार्ड्स टू इट्स यूनिट, किलोमीटर में, सेकंड में, और फिर आपके पास जो नहीं बड़ी वाला है मिलियन पर सेकंड. मिलियन पर सेकंड जो है
आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्सेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, और भी है। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू in this h as regards to kilometer per second and then million per sec, we can get the value around 15 billion, जो कि ये वैल्यू क्या कहती है उसको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लान्स स्पेस क्राफ्ट ने इसके थ्रू एक्सट्रापोलेट की है और उनके पास जो वैल्यू आ गई वो 13.8 बिलियन है, ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स। और इस तरह जो नासा की विल्सन है माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी की प्रूफ, they found it that it was around 13.7 बिलियन। अगर हम जनरली जाए तो there are exception that this can be, you know, more or less. So there is possibility of plus minus 50 million years की है, ठीक है, जब आपके पास ये वैल्यू आती है। तो it should not be more than 15 billion and it should not be less than 12 billion। तो ये तकरीबन 12 से लेकर 15 बिलियन तक आपके पास क्या आती है, एज ऑफ द यूनिवर्स एस्टिमेट हो जाती है जब आप ये वाला चीज़ इस्तेमाल करते हो, ये वाला फार्मूला एज रिगार्ड्स टू द कंसेप्ट व्हाट वी हैव लर्न सो फार। ओके, कमिंग टू द shift, and that is called cosmological shift। cosmological shift है, so we explain, it is also explained by Howell, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है। वो कहता है कि suppose you have a moving car, let me make it simple for you, this is what, say this is a moving body, ठीक है, and this is your road, गाड़ी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, and there is a person or observer, right, एक ही ऑब्जर्वर है और एक ये है, left side and right side। So let's take this person that the car is going away from this person while the car is moving towards this person, ठीक हो गया, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है ये कार। So here we say, जितना जो है ना आप you can understand or you have observed many times that when you hear the sound of ambulance, when the ambulance coming closer to you, so the sound increase, and when the ambulance moving away from you, so the sound decrease। So that's the simple analogy, you can understand this situation। जब ये कार इसकी तरफ आएंगे तो साउंड पिच, ठीक है, ये इंक्रीज होगा, और इसकी जो है ना ये जब ये कार इससे आगे जाएगी मतलब मूविंग अवे हो जाएंगी तो साउंड डिक्रीज हो जाएगा, राइट। this represents red shift in which frequency denoted by nu, इसको हम क्या कहते हैं, nu, nu smaller, decreases while lambda denoted by this symbol
लैम्डा इंक्रीजेस। जब ये कार इससे आगे जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएंगे क्योंकि पिच जो है ना वो कम होती है, या साउंड आसान अल्फाज में। इन कंट्रास्ट दिस पर्सन विल हेयर द साउंड मोर लाउड, ठीक है, आर लाउडर। और इसके आगे जो है ना, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट इन विच फ्रिक्वेंसी न्यू है, यू नहीं है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस वाइल वेवलेंथ डिक्रीजेस। अपोजिट टर्मिनोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी फिनोमेना को फिजिक्स में कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी शिफ्ट के बारे में हो गया। और ये हम एक्सपेंशन में भी इस्तेमाल करते हैं कि जितना एक बॉडी जो है ना हमसे मूव होती है, जो कि हमारे पास जो है ना एक कंसेप्ट है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है ना, CMBR। क्योंकि यहाँ जो है ना ये हमें जो है ना एब्जॉर्प्शन में क्या देते हैं, हमें ये ना रेड शिफ्ट देते हैं। तो ये मतलब हो गया कि ये गैलेक्सी जो है ना ये हमें जो है हमसे दूर होती जा रही है, हम यहाँ है और ये गैलेक्सी हमसे दूर होती जा रही है। इसी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन में जो है ना, जो कि CMBR के पाम में है, हमें रेड शिफ्ट देता है। सो दैट इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द एक्सपेंशन डॉपलर इफेक्ट, ठीक हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक इज origin of the universe right? It is also called hypothesis and assumption or theory. इसको हम नाम देते हैं nebula hypothesis, right? It was presented by Emmanuel S in 1734. ये एक theory है, and it is believed that there was irregular interstellar gas and dust. ऐसा कुछ irregular shape था, right? It was relatively stable due to two opposing forces acting simultaneously, but it is believed that there was the intervention of third force, ठीक है, that intervened and then destabilized this relatively stable interstellar gas and dust. इसको destabilize कर दिया क्योंकि इसमें जो है ना आपके पास क्या है, इंटरनल प्रेशर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आउटसाइड, इसको हम इंटरनल प्रेशर और फिर ग्रेविटी और फिर इंटरनल प्रेशर भी है ना, तो टू अपोजिंग फोर्सेस जो है ना सिमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। दिस टू अपोजिंग फोर्सेस स्टेबलाइजेस द इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट, ठीक। And it is believed that there was, a third intervention force. So, as regards to this concept, we come to believe that it can be, a giant super bright blue star, and because of its UV rays, ultraviolet rays की वजह से क्या हो गया, इसकी शॉक्स पड़ गई इस गैस या डस्ट स्टेबल सेटलर पर, and it is collapsed. The second assumption
is that another relatively stable interstellar dust and gas collided with this. क्या हो गई? collide हो गई, and this interstellar collapsed then or exploded. The third assumption can be that there was supernova that exploded in some time, exploding, and because of its shock wave, इसकी क्या गई? शॉक वेव की असर इस पर पड़ गई और बाद में ये क्या हो गई? ये कोलैप्स हो गई अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है। तो ये भी पॉसिबल है, ये वाले भी पॉसिबल है और ये वाले भी पॉसिबल है। वी कैन टेक अकाउंट ऑल ऑफ देम। ठीक है, जब ये हो गई सो इससे कुछ इस तरह सिस्टम बन गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोलर nebula that was spiraling and swirling disk of materials। इसमें कुछ प्लैनेट्स वगैरह नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये एक डिस्क है जिसमें चीज़ें जो है ना स्पायर कर रही थी, स्पिन कर रही थी। where heaviest and more masses are coalesced into core or center because of gravity, whereas light masses, छोटे छोटे पार्टिकल थे, fuse into planets and other interplanetary objects or material, जो कि बाद में जो है planets बन गई। और जो ज़्यादा हेवीएस्ट मासेस थी वो उसके बाद जो है ना हम जिसको हम आज सन कहते हैं, इसको क्या कहा गया? सोलर निबोला, right? And then in due course of time, when conditions were met according to some suitable circumstances, ठीक है, तो इससे फिर जो है ना एक और सिस्टम बन गई जिसको हम कहते हैं एक मतलब जो है ना मटेरियल का रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम बन गया जिसको हम कहते हैं प्रोटो प्लैनेटरी disk. It was the earlier type of our solar system जो कि आज हम एक डेवलप शेप देख रही है। ये वाला जो है ना इसका डेवलप शेप जो है ना ये है। ठीक है, और इसका डेवलप शेप जो है ना प्रेजेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि उस वक्त के जो सेंटर था जो कि आज सन है उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टार। और इसी तरीके से जो है ना ऑन theoretical background our solar system came into existence, and that's all because of our that's all about our today's session. So see you then in next classes.